BSSO मेन एग्जामिनेशन ପାଇଁ सोशियोलॉजी किसी क्वेश्चन डिस्कशन करिया बिल्कुल बेसिक रू स्टार्ट करूची एनसीईआरटी क्लास 11 रू आइडिया ही जो को प्रकार क्वेश्चन कोन तापर हमें हायर लेवल को जीवा ओके 11 देन 12 देन हायर लेवल जहां हम सिलेबस रे अछि दिस इज द फर्स्ट वीडियो क्लास 11 रो जते की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस केते गुडा दरकार केते नै जो दरकार नै हम स्किप कर दा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन होची हमरो Sociology focuses on interaction between individuals देला animal behavior, environment, peace and conflict. Conflict सहित sociology मतलब तार नहीं सो हमारा आंसर राइट आंसर होची interaction between individuals. Okay, sociology का ऊपर फोकस करची ना interaction between individuals. देन असला नेक्स्ट क्वेश्चन society is looked upon as society किन देखा जाए ना caste and class, social stratification, simple society or system of parts. So option D होची हमारा correct answer. System of parts will be the correct answer. जहाँ पर कि society is looked upon. Next question. Social control brings. Social control what does it bring? ना social order, deviance, disobedience or violence. देखो social control टा disobedience नु हो, violence नु हो, deviance भी नु हो तो so answer will be social order. Okay, आंसर कौन हम सोशल ऑर्डर किए आणुची ना सोशल कंट्रोल. देन slums in urban areas denote division of labor, overpopulation and migration, education and development, illiteracy. तो slums in urban areas denote को जिनसे उसे denote करची division of labor की ना education and development. education तो slums रे नहीं, illiteracy अच्छी but answer हबो हमर overpopulation and migration. Okay, option number B will be the correct answer. illiteracy मार दवने. चलो next question. A system of economic enterprise based on the economic exchange is known as कौन ए भितरु capitalism, industrialization, modernization ना westernization. आंसर होची capitalism. Okay, economic exchange. then असला one of the features of modern society ए भितरु कौन ना specialization of work, face-to-face interaction of members, urbanization and factory production, agricultural production. कौन होगा आंसर ना urbanization and factory production होची आंसर कौन urbanization and factory production will be the answer. This is the feature of modern society. Next question. Who wrote the book Sociological Imagination? Very important question. Okay, C.W. Mills होची author. Very important, मन रखो एग्जाम पे बहुत दरकार. C.W. Mills wrote the book Sociological Imagination. Next question. Industrial revolution was characterized by migration to cities, the emergence of clock time, bed sanitation and general squalor, all of the above. कौन हबो ना all of the above होची आंसर. Okay, migration to cities होची the emergence of clock time, bed sanitation etc. So industrial revolution रो characters. Next asla sociology, the study of human social behavior, plants and animals, man and environment. Okay, these are the wrong options. Human social behavior, sociology का study ना human social behavior. then asla macro sociology माने कौन macro sociology, the study of small groups की macro मान तो big large groups, minorities, tribal groups. so answer होगी large groups. okay, question on common sense knowledge lead to the sociological knowledge. माने common sense knowledge कहा को lead करची सॉरी common sense knowledge कहा को lead करची ना sociological knowledge ना social differentiation, common sense knowledge और sociological imaginations. so answer होची sociological knowledge. right, चलो next question देखिए. नेक्स्ट चैप्टर आसिल एक्चुअली कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स कथा देछि एथे चैप्टर रे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जोड़ा बेसिक जिंस गुडा जोटा तुम एक्वेंटेड न हो जो पिलान सोशियोलॉजी पढ़ी नंदी तांग पई चैप्टर किछि इन्फॉर्मेशन मिलियो. ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैरिटल बेनिफिट्स, देन असला स्पिरिचुअल थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट एमंग मेंबर्स, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एमंग मेंबर्स. कोन हो ह्यूमन लाइफ का ऊपर बेस करछि interaction and communication among members. okay, this is the right answer. Next question. Which is a mode of reward or punishment that reinforce strengthen socially expected
no forms of behavior identity conflict sanctions कौन हबो ना sanctions okay then the system in which society was divided into brahmins kshatriya vaishya and shudras was known as varna system class system status or caste system देखो caste system इट हेबनी मन रखतो this is varna system okay बोल से मन रखो वर्ण सिस्टम इज माने ता द्वारा डिवाइड होची सोसाइटी इनटू ए जो हमर चारटा सेक्ट अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्लेस और टाइम ऑफ वंस बर्थ आइडेंटिटी natal values और एग्रीगेट्स तो आंसर होची natal is natal refers to the place or time of one's birth चलो नेक्स्ट होची ए पीयर ग्रुप इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीयर ग्रुप कथा बारंबार एग्जाम रे आछी पीयर ग्रुप रे थ्योरीटा सो पीयर ग्रुप होची गोटे प्राइमरी ग्रुप ओके कोन गोटे प्राइमरी ग्रुप पीयर ग्रुप देन आसला द बिहेवियर्स ऑब्लिगेशंस एंड प्रिविलेजेस अटैच्ड टू सोशल स्टेटस इज नोन एज स्टेटस सेट रोल सेट सोशल रोल और स्टेटस सिंबल तो आंसर होची सोशल रोल कौन सोशल रोल ओके सोशल रोल बिहेवियर ऑब्लिगेशन प्रिविलेजेस अटैच टू सोशल स्टेटस ताको हमें सोशल रोल बोली कहूचे देन पंचमस इन द कास्ट सिस्टम वेर कंसिडर्ड आज पंचम कास्ट सिस्टम रे कहा जाए अनटचेबल्स वैश्य शूद्र एंड और क्षत्रिय आंसर हम अनटचेबल्स ताको पंचमस कहूचे ओके देन द पर्सपेक्टिव which stresses that deviance promotes social unity and social change is conflict, functionalist, interactionism और postmodernism तो आंसर होची functionalist functionalist कौन ना the perspective which stresses that deviance promotes social unity and social change ताको हमें functionalist पूछे नेक्स्ट असला social classes status groups age and gender groups and crowds are the examples of social class status group age and gender groups crowds are the example of reference group na peer groups na in groups na quasi groups तो आंसर होची quasi groups okay मन रखो these are sociological terms you should be acquainted with that the basis of caste system होची ascribed status achieved status power wealth सुनो ascribed power wealth होबनी एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस भितर डिफरेंस कौन ना एस्क्राइब्ड होची आम जन्मगत जो स्टेटस मिलूची ताकू एस्क्राइब्ड कहूची अचीव्ड माने जोटा सोसाइटी रे मनीष आफ्टर स्ट्रगल जोटा अचीव करची ताकू जेंति गोटे पोजीशन ऑफ आईएएस हला एक्टर हेगला से लेवल रे पहुंचला परे ताकू आमे से स्टेटस को अचीव कला बोली कहूचे बट एस्क्राइब्ड स्टेटस होची जेंति तुम रिलीजन कास्ट दीज थिंग्स आर एस्क्राइब्ड जोटा कि आमे गिफ्टेड बा आम जरा पाइजे ऑटोमेटिकली ओके इनहेरिटेड सो द बेसिस ऑफ कास्ट कास्ट सिस्टमटा केमती आसे गोटे मनीष को से माने ब्राह्मण रो पुओ ब्राह्मण हैला क्षत्रिय पुओ क्षत्रिय हेगला ना दैट इज व्हाई एस्क्राइब्ड स्टेटस ओके कास्ट सिस्टम कोन ना गोटे एस्क्राइब्ड स्टेटस नेक्स्ट क्वेश्चन माइग्रेंट्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज आउट ग्रुप्स इन ग्रुप्स peer groups or reference groups so migrants are actually out groups कोन आउट ग्रुप्स इंपोर्टेंट ओके नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ए चैप्टर सरला एबे हम देखिबा कोन छाड़ देले कि ओके चैप्टर नंबर 3 जोटा कि अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन माने जेंति मैरिज हेगला फैमिली हेगला दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस मन रखो एंड एथरे जहा एमसीक्यू छै हम देखिए ओके क्वेश्चन होची द इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच highly complex divisions of labor is present it is a feature of which of the following modern society simple society globalization or rural economy answer होची modern societies okay modern society रे कोन होची economic system in which highly complex division of labor is present ठीक अछि simple society रे नाही globalization रे नाही rural economy रे नाही कोनटा का कथा में कहूचे complex division of labor okay complex division of labor कोड देखा जाए ना modern societies next question the undisputed political rule of a state over a given territorial region is known as sovereignty democracy monarchy or bureaucracy undisputed political rule of a state
ओवर ए गिवन टेरिटोरियल रीजन ताको आम कौन कहे ना सॉवरेनिटी कौन कहे सॉवरेनिटी सार्वभौमता नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनलिज्म बिलीव्स दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस अराइज इन रेस्पॉन्स टू द फंक्शनलिज्म बिलीव्स दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कर अराइज इन रेस्पॉन्स टू सोशल इंस्टीट्यूशन मानकर एराइज केमती होती किए बिलीव कर फंक्शनलिज्म ओके फंक्शनलिज्म बिलीव कर सोशल इंस्टीट्यूशन मान केमती एराउज होती ना कॉन्फ्लिक्ट एमंग पीपल ना डिस्क्रिमिनेशन ना नीड्स ऑफ सोसाइटी और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी आंसर होची नीड्स ऑफ सोसाइटी द्वारा सोशल इंस्टीट्यूशंस आर मतलब एराइज जमती कि तुम मैरेज नीड हो गला गोटे लोक नीड family that is also a need that is why social institutions are arose next question the family in which a person is married is known as family of procreation family of orientation nuclear family कौन हबो family of procreation the family in which person is married is known as married person कौन family of procreation family in which person is married is known as फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन चलो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक एगुड़ाक तुम बेस्ट क्वेश्चन गुड़ाक ओके हायर लेवल क्वेश्चन आसो तुम नेक्स्ट वीडियो मानक इन सिंपल और प्री मॉडर्न सोसाइटीज मोस्ट ऑफ द पीपल वेर एंगेज्ड इन जानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रे प्राय लोक एंगेज थे आगु ओके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्री मॉडर्न सोसाइटी रे मोस्ट पीपल वेर एंगेज्ड कौथे ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल नुह बिजनेस नुह माइनर वर्क नुह ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली वेयर मैन एक्सरसाइज ऑथोरिटी एंड डोमिनेंस पैट्रियार्की मैट्रियार्की और पोलीगामी और पैट्रिलिनियल सुनो पैट्रियार्की हूँ आंसर राइट आंसर जो थे कि मेल डोमिनेंस रोची मेन एक्सरसाइज ऑथोरिटी एंड डोमिनेंस जो थे मेन रो डोमिनेंस रोची ताको हम पैट्रियार्की वुमेन डोमिनेंस थिले मैट्रियार्की पैट्रिलिनियल फादर साइड ओके फादर को साइड रिलेटिव्स देन आसला रिलीजन इज कंसीडर्ड आज प्रोफेन ए बिलीफ सैक्रेड और कस्टम रिलीजन को आम को भाव में कंसीडर करछे ना सैक्रेड कौन रिलीजन इज सैक्रेड ओके देन आसला the reason for the sudden decline in sex ratio can attributed to sudden decline of sex ratio can be attributed to कौन female feticides life expectancy rate son preference maternal mortality rate बिल्कुल नहीं son preference मध्य नहीं life expectancy ratio नहीं so answer will be female feticides okay next the form of power considered legitimate is the form of power considered legitimate is authority political party welfare state or sovereignty कौन होगा आंसर ना authority okay authority is a form of power considered legitimate then होची the concept of sacred is related to which of the following everyday life profane supernatural और power आंसर होची supernatural कौन concept of sacred का सहित related supernatural सहित next question institutions of politics is concerned with the domination ना parliament distribution of power elections देखो institution कथा पढ़ी है भल से ध्यान दियो दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट वर्ड इंस्टीट्यूशन कथा आम पढ़ले बर्तमान ता विषय में पढ़ुचे इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स गोटे हूँ सोशल इंस्टीट्यूशन इज कंसर्नड विथ द डोमिनेशन पाई पॉलिटिक्स अच्छी कि नाई पार्लियामेंट पाई अच्छी कि नाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पाई अच्छी येस और नो येस इलेक्शन पाई अच्छी कि नाई सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हूँ तार कंसर्न ओके माने पावरटा सेंटर जमी स्टेट को आसो आ ग्रास रूट लेवल को पहुँची पार आ सब जगह गवर्नान्स ठीक ठाक चलो सहीटा हूँ द ग्रेट कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स देन आसला कौन द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फोकल पॉइंट से पचार माने सिटीज और रूरल एरियाज और फैक्ट्रीज ऑप्शन नंबर डी हूँ तुम मार्केट देछि सो फैक्ट्रीज हूँ फैक्ट्रीज थी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम सो आंसर हूँ फैक्ट्रीज ओके केतटा क्वेश्चन तुम्हें आंसर माने पढ़िया भी दरकार नहीं बेसिक नॉलेज यूज करके छोट पिलाने करें लास्ट क्वेश्चन दरकार नहीं ओके
the socially acknowledged and approved sexual union between two individuals. Everybody knows marriage. Okay, so thank you for watching and see you in the next video.